दोस्तों अगर आप लोग YouTube ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसके अलावा मैंने मजीद वीडियो अपलोड की हुई है, जैसे कि एआई से आप किस तरह से ऐसी वीडियो बना सकते हैं, ऐसी वीडियो बना सकते हैं, ऐसी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और इनके स्क्रिप्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मजीद आप लोग अगर एक्सेल सीखना चाहते हैं तो एक्सेल के हवाले से भी वीडियो अपलोड है, यूट्यूब के हवाले से भी वीडियो अपलोड है और एआई के हवाले से भी अपलोड है। मजीद आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन मिरर करना चाहते हैं या सऊदी अरब के कानून वगैरह के लिए आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूं किस तरह से आप लोग जो है वो यूट्यूब से जो है वो इजीली यूट्यूब ऑटोमेशन करके पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल गूगल में टाइप करना है नोटबुक LM, ये सर्च कर लेना है, ऐसी वेबसाइट आप लोगों के पास आ जाएगी। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, ठीक है। इसमें लॉगिन हो जाना है, जस्ट इस क्लिक के ऊपर लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे करना है क्रिएट न्यू। अब क्रिएट न्यू के लिए वो बोलता है कि हमें यहाँ पे कोई सोर्स दे दो या कोई फाइल अपलोड कर दो या कोई यूट्यूब का लिंक दे दो या ड्राइवर या कॉपी कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दें ताकि हम लोग जो है आप लोग को वो चीजें बता दें, ठीक है। यहाँ से ऐड सोर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने एक वीडियो सर्च की हुई है इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की बायोग्राफी के हवाले से। ये वीडियो जैसे ही आप लोग इसमें सर्च करेंगे, ठीक है, ये आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ला के दे देगा। जैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पे आके आपने वीडियो ओवरव्यू करना है, ऑडियो ओवरव्यू करना है या आप लोग यहाँ से कोई भी चीज जो है वो कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को ओवरव्यू कर लेता हूँ तो ये वीडियो क्रिएटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ना कोई कॉपीराइट आएगा, ठीक है, ना ही कोई स्ट्राइक वगैरह आएगी और यूट्यूब ऐसी वीडियो को मोनिटाइज भी करता है। आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेनी है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेनी है। अब यहाँ से उसने यूट्यूब की वीडियो उठाई है, आपको यहाँ पे वो न्यू वीडियो जनरेट करके दे देता है, पूरे ग्राफिक्स वगैरह, पूरी एक न्यू थीम, एक न्यू स्टाइल के साथ। अगर आप लोग ऑडियो भी चेंज करना चाहते हैं ऑडियो भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी वीडियो जो है वो उर्दू में है या इंग्लिश में, आप उसकी लैंग्वेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट करने के साथ एक्सप्लेनर में आता हूँ, यहाँ पे ब्रीफ है और यहाँ से आप लोग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बाकी इसमें कस्टम जो है वो चूज कर दे। उसके अलावा आप इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि किस चीज के ऊपर फोकस करना है और क्या चीज जो है वो आपने लेके आनी है, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मजीद काफी सारे स्टाइल्स और कलर वगैरह क्राफ्ट दिए हुए हैं। यहाँ से मल्टी लैंग्वेजेस भी हैं, आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, किसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे वीडियो बनाएं और डायरेक्ट क्या हो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आप लोग कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो अभी देखते हैं कुछ अर्सा के बाद। यहाँ से आप लोग क्विज वगैरह और इनकी बात इंफोग्राफी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इंफोग्राफी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो इंफोग्राफी जनरेट स्टार्ट हो गई है। सिंपल टूल है, गूगल का टूल है, यहाँ पे देख लें netbook.lm.google.com है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मजीद जब तक वीडियो क्रिएट होती है आप लोग मेरे चैनल को लाजमी रिव्यू करें। मल्टी टाइप की वीडियोस एंड टेक्नीशियन टेक के रिलेटेड है, सऊदी अरब के रिलेटेड है, आप लोग ये वीडियो लाजमी जो है वो यहाँ पे देखें। मजीद जो जो गैजेट में यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग वो भी देख सकते। वीडियो जनरेट हो रही है, कुछ टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा वीडियो को होल्ड कर देता। दोस्तों तो वीडियो रेडी हो गई है इमरान खान के हवाले से। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसको देख लेते हैं कि कैसी वीडियो थी। ये देख लें, अब ये वीडियो ऐसी है और यहाँ पे आप लोग आ जाए, यहाँ पे ये जो वीडियो है वो कैसी शो करती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वीडियो कुछ इस तरह से शो कर रही है, लेकिन अब यहाँ पे ये वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से शो कर रही है। आप लोगों को मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। 5.21 सेकंड की है, तो इधर तकरीबन 12 मिनट की है, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट की वीडियो आई है। आप लोग इसको देख सकते हैं। मजीद इसके अंदर जितनी भी ग्राफिक्स वगैरह यूज हुई है वो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपेयर हो रही है, ठीक है। अगर इसकी मैं ऑडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो charge to the poor. Okay, so he has this incredible dream. But as we all know, having a dream is one thing. Actually making it happen, that's a whole different ballgame.
And the journey to build this hospital would turn out to be his toughest fight yet, way harder than any cricket match he ever played. And man, did he face resistance. I mean, at every single turn, the government flat out refused to help. His advertisements were blocked, crucial medical equipment got held up. He even went to the country's wealthy elite, and they turned him away. So, faced with all these roadblocks, he just changed his whole strategy. He decided to bypass the powerful and take his case straight to the people of Pakistan. And the public's response was just, आप लोगों ने जस्ट वीडियो को डाउनलोड करना है, अगर आप उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देंगे तो वो अच्छी है। ये वीडियो जो है वीडियो के लास्ट में मैं प्ले कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो आप लोगों ने डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करनी है, कुछ चेंज वगैरह करके यूट्यूब इसको मोनेटाइज भी करेगा और आप इस तरह से ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं और यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़। From the cricket pitch to the Prime Minister's office, his is a story of some pretty dramatic shifts and, well, constant reinvention. So today, we're going to try and unpack the really complex journey of one of the world's most fascinating public figures, Imran Khan. So, who is he really? Is he the World Cup winning captain, the international playboy, or the populist politician? You know, all of these labels kind of fit, but at the same time, none of them tell the whole story. Let's follow the path that connects these very different people, all living inside one man. You see, before all the politics, before pretty much everything else, the world knew him as a cricketer. It was right there, on the pitch, that Imran Khan first became a household name, not just in Pakistan, but all over the globe. And his rise was, well, meteoric. He was born into a prominent family in Lahore and was already playing for his city by the time he was 16. Just think about that. By 19, he's on the national team while also studying at Oxford. But the absolute peak, the moment everyone remembers, was 1992. That's when he led his nation to its first and, so far, only Cricket World Cup victory. What's wild is that he was living this incredible double life. His summers were spent in England, where he was a regular in London nightclubs, famous for his charisma, often seen with supermodels. Actually, it was Benazir Bhutto who, during their Oxford days, gave him the nickname the Lion of Lahore. But then, in the winters, he'd go back home, and he was this revered national hero, the all-rounder who could single-handedly win a match. But yeah, that kind of celebrity lifestyle, it doesn't come without some controversy, right? One major incident that could have totally derailed his career was the Sita White case. She was the daughter of a prominent businessman, and she claimed that Khan was the father of her daughter Tarian. And look, Khan himself doesn't really run from his past. He's openly admitted, I was not a pious person, and that he had many flaws. He points to a very specific time, right after he retired from cricket, as the moment when his life took a complete and total U-turn. Now, this U-turn he talks about, it wasn't just a simple career change. No, it was way deeper than that. It was a fundamental shift in who he was and what he stood for, and it was all triggered by a profound personal tragedy. So, back in 1985, this is 3 years after he became captain, but still years before that World Cup win, his mother, Shaukat Khanum, passed away from cancer. He was incredibly close to her, and watching her struggle, seeing firsthand how hard and expensive treatment was in Pakistan, well, it planted a seed for a brand new mission. All of that grief, it didn't just fade away. It transformed into this singular, powerful passion, a dream. He was absolutely determined to build a state-of-the-art cancer hospital in his mother's name, one that would give treatment completely free of charge to the poor. Okay, so he has this incredible dream. But as we all know, having a dream is one thing. Actually making it happen, that's a whole different ballgame. And the journey to build this hospital would turn out to be his toughest fight yet, way harder than any cricket match he ever played. And man, did he face resistance. I mean, at every single turn, the government flat out refused to help. His advertisements were blocked, crucial medical equipment got held up. He even went to the country's wealthy elite, and they turned him away. So, faced with all these roadblocks, he just changed his whole strategy. He decided to bypass the powerful and take his case straight to the people of Pakistan. And the public's response was just overwhelming. There's this one story from his fundraising tour where a young girl came up to him, took off her own ring, and just gave it to him. She said she wanted to do her part for the poor patients. That one small act, it symbolized this massive national movement. People from every walk of life started donating whatever they could, jewelry, savings, anything. So what was the result?
It was just staggering. The initial goal for the campaign was $250,000, but by the end of it, the people of Pakistan had donated 3 times that amount, $750,000. His dream, powered by the public, was actually becoming a reality. This whole journey, this tough, exhausting, but ultimately triumphant fundraising tour, it sparked his final and most dramatic U-turn. His mission grew. It wasn't just about building a hospital anymore. It was about changing the very system that made it so incredibly hard to build in the first place. And this quote right here, it captures his big aha moment perfectly. As he traveled the country, talking to ordinary people and seeing their incredible generosity, he came to a conclusion. The problem in Pakistan, he realized, wasn't a lack of resources, and it definitely wasn't a lack of spirit from the people. The problem, as he saw it, was a lack of honest leadership. And that conviction is what pushed him into his next arena, politics. So, it all leaves us with this really compelling question, doesn't it? From a cricket icon driven by winning, to a philanthropist driven by grief, to a politician driven by what he saw as a need for change. His journey shows how a personal mission can grow into a national one. And it really makes you wonder about the limits and the possibilities when a sports hero decides to step onto the world's most complicated stage.